हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज भवानी। समस्त को आम चैनल साई स्टडी क्लासेस को स्वागत। तो आज आम तुम मान छुआ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक जनरल अवेयरनेस रो पार्ट 7 सेट आम तुम मान नहीं आसचे। ता सहित आम ए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आलोचना करवा। ता सहित जानिबा जे हमर जनरल अवेयरनेस रे कोन कोन सब मेन इंपोर्टेंट टॉपिक्स मेन सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहउची ताको हम भलावरे देखिबा। ठीक अछि। ता सहित छुआ आमर ये क्लास को बढ़िया पूर्व चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दियंतु जहा फले हमको मोटिवेशन मिलबा हमें और नुआ नुआ वीडियो आपण मन पई नहीं कि आसीबा थ्रू आउट द चैनल। आमर छुआ एंटायर बीएड एग्जामिनेशन पई हमें हला प्रिपरेशन करूचे एवं तुम माने भी हला कोन हम चैनल रे फ्री ऑफ कॉस्ट रे बीएड एजुकेशन प्रिपरेशन करि परिबो। ता सहित आम ऐप रे मध्ये आपण माने हला कोन ना बैचेस सब अछि ताको मध्ये आपण माने कोन ना तार फायदा उठै परिबे এবং এটা হলো আমার টেলিগ্রাম হ্যান্ডেল আপন মানে এটি জয়েন করি পারিবে। তা সହିତ এটা আমার ইউটিউব হ্যান্ডেল আপন মানে এটি স্ক্যান করিকি কোন না ডাইরেক্টলি আমার চ্যানেল को विजिट करि परिबे। ओके এবং प्ले स्टोर रे हम ऐप मध्ये डाउनलोड करि परिबे। तो क्लास को बढ़िया पूर्व चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दियंतु एवं समस्त पाखरे पहुंचे दियंतु। लाइक करिया पई मात्र ही गोटे सेकंड लागिवो एवं सब्सक्राइब करिया पई मात्र गोटे सेकंड एवं समस्त पाखरो नुआ नुआ पिला मान को पाखु वीडियो पहुंचान। ता सहित तुम मानकर किछि क्वेश्चन आपण माने भूल कहउतले जे सर ई क्वेश्चन टा भूल अछि आपण ताको ठीक करे देबे। तो मु जानि परछि बट से क्वेश्चन टा मु किछि किछि क्वेश्चन मु जानि जानि भूल करे थाए जा फल तुम मानकर अटेंशन बढ़ियो तुम माने ताको विविडली देखिबो एवं तुम माने से सब ऊपर हला विविडली तुम मानकर हला कोन ना माने पदक्षेप टा रहिबो जे एटा भूल हला आकु ठीक करेबा। तो सेति पई एटा हला गोटे प्रयास थिला। तो सेति पई जाउ तुम मानकर ओडे हला कोन ना पॉजिटिव अप्रोच आसला एवं तुम मान समस्त को जो माने भी हमर जनरल अवेयरनेस क्लास को देखुचंती समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। ता से तो एमिति भाबरे देखो कोउठी भूल होउची बा कोउठी असुविधा रहउची सेडी आइडेंटिफाई करो। ता से तो तुम माने आहुरी मते एनकरेज करछो जे सर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी रो कॉम्पिटिटिव लेवल रो क्लास आनिया पई। तो मते बहुत ही भल लागुची एवं निश्चित मात्रा रे मु ट्राई करबी जे से सब ऊपर निहाती भाबरे गोटे माने फुल फ्लैश्ड क्लास आनिबा जा फले तुम माने उपकृत हेई परिबो। ओके ए सब विषय रे हमें ट्राई करिबा। ता से तो हमें जो क्लास रे मध्य हमर ए जो थ्रू आउट द क्लास हमें देखिबा हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ऊपर बेस्ट एंड स्टैटिक जीके ऊपर बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्य क्लास रे आलोचना कर दवा एवं तुम माने समस्त नोट करू था एवं ताको समस्त नोट करिके पढो। ठीक अछि। तो आज रे देखो प्रथम क्वेश्चन देखिबा कोन अछि ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is correct for the tip of a second needle second hand in a watch or the clock or a clock in 1 minute कोनटा हबो। it is distance and displacement both zero, its average speed and distance are both zero, its average velocity and displacement are both zero, its average speed and average velocity are both zero। तो एथि मध्यरु छुआ कोनटा यार राइट आंसर हबो तुम माने मते कुह जल्दी कमेंट सेक्शन रे। मात्र कहिबा पई केते समय लागिवो हाईएस्ट हाईएस्ट कहिबा पई तुम मान को छुआ लागिवो केते ना 5 सेकंड्स 5 सेकंड पुनी ए बी सी डी रे आंसर मात्र देबे। तो सेति पई ट्राई करन तो समस्ते एवरीवन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। ऑप्शन सी द एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर बोथ जीरो। ओके ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एटा हला तुमर छ जनरल साइंस रो क्वेश्चन। जनरल साइंस रो तुम मान कर छ क्वेश्चन आछि तो सेति पई ता पई तुम माने अवेयर थिबो एवं ता से हमें आहुरी जनरल साइंस रो क्लासेस हमें करिवा बा क्वेश्चन गुडी को करिवा डोंट वेरी। ठीक अछि। तो एटा हबो कोन ना ऑप्शन सी द एवरेज वेलोसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट आर बोथ जीरो। What is a cabinet form of the form of government? The form of government in which a group of collective responsible to the parliament, a form of government in which a group is not responsible to the parliament is decide on the policies of the government, a form of government in which a group is the real and the popular head of the state, a form of government in which all the cabinet members are head of the state। कोटा हबो a form of government in which a group of collective responsible to the parliament। ओके एटा बहुत ही भलो भाबरे मन रखिबो। एटा हला तो तोर छ पॉलिटी बा साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट रो ऊपर क्वेश्चन ता तो सेति बहुत ही भलो भाबरे मन रखिबो जे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कोन ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज द ग्रुप ऑफ कलेक्टिव रेस्पोंसिबल टू द पार्लियामेंट। ओके
जवाहर नवोदय विद्यालय आर डैश कौन हम छुआ ऑप्शन ए को एजुकेशनल फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल इन रूरल एरियाज ऑप्शन बी only boys residential school in rural areas option C only girls residential school in rural areas and option D co-education partially residential school in rural areas which one is the correct answer जवाहर नवोदय विद्यालय आर D is the right answer co-educational and partially residential school in rural areas. तापर देखो तो the Cipro committee was appointed in 1934 by the government of which state? Maharashtra, West Bengal, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh. Cipro committee. उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर जल्दी ए बी सी डी रे आंसर देवा पई ट्राई जल्दी ही करंतु according to the right to education act 2009 what does the elementary education mean preschool to grade 5 grades 1 to 5 preschool to grade 2 and grades 1 to 8 which one is the correct answer 25 रे छुआ करेक्ट आंसर कौन हबो now according to the right to education act 2009 what does the elementary education means the grade 1 to 8 okay identify an NGO form the following which recruits college graduates and working professionals to serve as full-time teacher in a low income school learning India change India tuition for India teach for India which one is the correct answer identify an NGO form of the following which recruits college graduate and working professional to serve as the full-time teacher in a low income school teach for India scheme अंतर्गत okay अंतर्गत ସେମାନେ ହେଲା କଣ ନା low income full माने education ଦେଇଥାନ୍ତି the number of seat in Lok Sabha allotted to the different seat to determine based on the states mineral resources population area and geographical location which one is the correct answer एटा समस्त जानि थिबो population wise हला कोन ना हमरो स्टेट्स दिया जाए बा जो एमपी को बाछा जाई था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पॉपुलेशन वाइज बाछा जाई था myopia is a disorder associated with which of the following sense organs eyes ear skin and nose which one is the correct answer eyes habo ठीक अछि eyes myopia is related to the disorder is related to the eye what is the meaning of the term shiksha derived from the Sanskrit root word sahas okay what is the meaning to discipline to study to learn to enlightenment कोटा हवछ which one is the correct answer sahas hela means hela kono discipline okay to discipline as per the direction of the Supreme Court which committee was set up in the year okay which committee was set up in the year 2005 to investigate the directive issue of the student union election in the universities and colleges which one is the correct answer as per the direction of the Supreme Court which committee was set up in the year 2005 to investigate the directive issue of the student union elections in the university and colleges. Saha committee, Langdo committee, Lingdo committee, and Lingdo committee and Yashpal committee, Kilkar committee. Which one is the correct answer? Correct answer la B, Lingdo committee. Okay. A cannonball or shell is fired from a cannon and it explodes in the mid-air. In this regard, which one of the following statement is correct for the cannonball? The momentum of the system increases, the momentum of the system decreases, the momentum
sorry, it has a total momentum of the system increases, total momentum of the system decreases, total momentum of the system decreases, and total kinetic energy of the system decreases. Which one is the correct answer? अच्छा, total kinetic energy of the system increases हबो, ठीक है जी. Total kinetic system of the kinetic energy of the system increases. Okay, increases हबो. Okay, भूल अछि. Who among the following leader was not a leader of the Socialist Party in India? अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नारायण नरेंद्र देव, EMS नंबोद्रिपद, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, and EMS Namboodiripad. Which one is the correct answer? EMS Namboodiripad is the right answer of this question. Who among the following leader was not a leader of the Socialist Party in India? Which of the following is a type of school dating back to the Vedic period? Which of the following is a type of school dating back to the Vedic period? The Jain monastery, the Gurukul system, the Buddhist monastery, and the church. And how about the Gurukul system? No, the Gurukul system is back to the Vedic period. In the year 1917, the Sir Michael Sadler chaired the Bombay University Commission, Madras University Commission, Calcutta University Commission, and Delhi University Commission. The answer is Kolkata University Commission. Who is given the responsibility to track student attendance and bringing dropout back to the school? Teacher, principal, social work, school management committee members. Teacher Bhabani, principal and social worker, school management committee members. He is the responsible the track of student attendance and bring dropout back to the school. The intensity or the magnitude of the earthquake is measured using Richter scale, Kepler scale, secant scale, and Beaufort scale. रिक्टर स्केल हो समस्ते जानी थी आम ओडिसा रो रिक्टर स्केल माने केते सेल्सियस भितरे ने 2 रु 3 ओके 2 रु 3 रिक्टर स्केल सेल्सियस भितरे रुए बा रिक्टर स्केल रो जो परिमाप भितरे 2 रु 3 आम ओडिसा रही था ठीक है तिबा एते देखा जाय नाही सबठर अधिक सुनामी बा सॉरी भूमिकंप कोठी हेता जापान रे ठीक है जी जापान रे सबठर अधिक भूमिकंप हेता ओके as per the article 173 of the Indian Constitution, to be a member of the Legislative Assembly, he or she must not be less than 30 years of age, 20 years of age, 32 years of age, and 25 years of age. (25 years of age). Okay. For which stage of education did the new education policy 1986 recommended vocationalization of education? कोटा higher primary, elementary, secondary. For which stage of education did the new education policy 1986 recommended vocationalization of education? Higher primary, elementary, secondary. Secondary. Teacher training was renamed as the teacher education by which of the following commission? Secondary Education Commission, Sadler Commission, Indian Education Commission, University Education Commission. Which one is the correct answer? Indian Education Commission टा हला Indian Education Commission is turn the teacher training को हला teacher education commission भितर turn करा माने परिवर्तन करा हला. Developing the sense of cooperation among the university departments and other training institutes and providing suggestions for the development of stage teacher educators in the function of the which of the following agencies? State Board of Teacher Education, State Council of Educational Research and Training, State Institute of Education, National Council of Educational Research and Training.
Which one is the correct answer? এটা কি department মানে developing of the sense of the corporation among the university department and other training institutions are providing suggestion the development of state teacher educators in the function of which of the following agency allow state council of educational and research and training ଯେମିତି ଆମର SCERT ସାଇଡ୍ ରେ ଦେଖିବ ସବୁ କିଛି ପାଇବ कोउटी बीएड पाखर आरंभ करी सिटी हाई स्कूल सॉरी हमर कोन +2 ग्रेजुएशन एंड एवरीथिंग एससीआरटी साइड रे तुम माने पाई परिबो ठीक अछि तो एतिकी थिला छ टॉप 20 क्वेश्चन आई होप तुम मान को बहुत ही भल लागि थिबो ओके ता सहित तुम मान को पई होमवर्क रो किछ क्वेश्चन दवा होमवर्क ले छ कहबो प्रेसिडेंट ओके प्रेसिडेंट केते तम आर्टिकल रे अछंती वाइस प्रेसिडेंट केते तम आर्टिकल रे अछंती वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर केतेतम आर्टिकल रे अछि गवर्नर ओके गवर्नर केतेतम आर्टिकल रे अछि फंडामेंटल राइट्स केउ देश रो आसीची फंडामेंटल राइट्स केउ देश रो आसीची फंडामेंटल ड्यूटीज केउ देश रो आसीची फंडामेंटल ड्यूटीज केउ देश रो आसीची हमर 11 नंबर शेड्यूल कोन कहूची एवं 12 नंबर शेड्यूल कोन कहूची ठीक अछि 11 नंबर शेड्यूल कोन कहूची 12 नंबर शेड्यूल कोन कहूची प्रेसिडेंट को आर्टिकल रे अछि वाइस प्रेसिडेंट को आर्टिकल रे अछि प्रेसिडेंट को जो ग्रांड पैराडॉन सेटा को आर्टिकल रे अछि जदि के कहि परिबो गवर्नर को आर्टिकल रे अछि फंडामेंटल राइट्स केउ देश रो आछि फंडामेंटल ड्यूटीज केउ देश रो आछि 11th शेड्यूल रे कोन अछि एवं 12th शेड्यूल रे कोन अछि एवं एटा केते तम अमेंडमेंट रे हितला एतकी तम पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम माने मते कमेंट सेक्शन रे निश्चित भाबरे जणेबो आई होप तुम माने भी जणेबो एवं ता सहित छ पढुता एग्जाम पे प्रिपरेशन बहुत ही भलो भाबरे चला निश्चित मात्रा रे तुम मानकर एग्जाम छ जुलाई जून लास्ट नले जुलाई रे हबो कंफर्म तो सेति पे बहुत ही अल्प दिन रहला निज को प्रिपेयर कर एग्जाम पे जेमति सीट तुम मानकर गोटे पक्का हो ठीक अछि तसे तो हम वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो एवं पाखरे थिबा नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दियो जा फल तुम माने हमर एवरी वीडियो नोटिफिकेशन जल्दी ही पाई परियो ठीक अछि थैंक यू टेक केयर सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास